सुन आज आम पढ़ा आमर लास्ट चैप्टर कौन से गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है एथिरे आमर हे परिबो लॉन्ग क्वेश्चन मु दुईटा क्वेश्चन कहबी से दुईटा जाक कहबो गले सेम हैला तो माने देखो गोटे तुम शॉर्ट क्वेश्चन आनले व्हाट इज ट्रूथ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारा हे परिबो व्हाट इज ट्रूथ व्हाट इज नॉन वायलेंस हैला तो एगुडा सब कोन हे परिबो शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो किंतु लॉन्ग क्वेश्चन हेले तो कोन हबो ना गांधी ट्रूथ एंड एथिरे शॉर्ट क्वेश्चन हबो व्हाट इज ट्रूथ मैंने 2 मार्क्स रे लिखिबो तो देखि के है व्हाट इज नॉन वायलेंस ताप लिखि परिबो डिस्कस हाँ चलिबो डिस्कस इन details the हाँ Gandhian non-violence लॉन्ग क्वेश्चन हे परिबो स्टेट हाँ हे परिबो एक्सप्लेन गांधीजी axiom of non-violence और हे परिबो long question what is एटा कौन जे what is the Gandhian concept of truth and lens बुझला एते के क्वेश्चन हे परिबो खाली नॉन वायलेंस हे परिबो लॉन्ग क्वेश्चन खाली नॉन वायलेंस हेले कोन लिखिबो तमे तार इंट्रो लिखिबो ठीक तापरे नॉन वायलेंस कोन लिखि दबो हला आ जदी ट्रूथ और नॉन वायलेंस पडला डेटा जक ट्रूथ भी लिखिबो नॉन वायलेंस भी लिखिबो तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस रो मु किछटा पॉइंट देखिबी अल्प अल्प शॉर्टली बुझाई देबी तमे ने नोट्स बनेले तार कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुडा का पॉइंट पॉइंट अछि से गुडा को बनेबो हला अल्प देखिबी पूरा माने ना मो डाकुची लिख तापर सत्य व्हाट इज माने देखो फास्ट लिख लिख तमे माने लिख सत्य डाकी देबी एंड अहिंसा डाकी देबी हैला तापर तम माने कोन करबो तार जो सब इंपोर्टेंस पॉइंट अछि देखो आई टू आई थर्ड आई भी एंती देकी लिखा है सेटा लिख
देखो समस्त पॉइंट दे कि लिखा है किछि इंपोर्टेंस पॉइंट एटा होछि ट्रुथ रो आ किछि इंपोर्टेंस पॉइंट अहिंसा रो मध्ये अछि सेगुडा के लिखिबो एबे लिखो गांधीयन ट्रुथ गांधी लिखिबो गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस रो पॉइंट किछि लिखो सेटा बुझे दउ छी कोन कहउछ लिखिबोनी ना कोन हां लिखिबो लिखो ना ना लिखो लिखो एटा लिखो मु जोटा डाकुची लिखो लिखो बुझेबी पुणी एक्सियम्स माने थ्योरी देखिबी तापरे कोन करिवो तम माने पढिबो जा डाउट सब कहबो ना एटा पढिबोनी जे किनु ले लॉजिक रे हम कहबो जे मु पढिबिनी मोर हेई जाई जे एडे जम्मा भाबिबोनी ले हेई जाईथिले भी प्रैक्टिस करिवो एटा हबो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन कोन करे देखिबी सरला एक रश्मिता लिखो आंसर रे लिखो हला एडे को क्वेश्चन व्हाट इज गांधीयन कांसेप्ट ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस है ना सेतिरे लिखो द गांधी सॉरी द गांधीयन प्रैक्टिकल फिलोसॉफी द गांधीयन प्रैक्टिकल फिलोसॉफी the Gandhian practical philosophy is based on based on basic principle of satya principle of satya bracket रे लिखिबो truth satya bracket रे लिखिबो truth and अहिंसा ब्रैकेट रे लिखिबो कोन नॉन वायलेंस देखिला फुल स्टॉप truth and non violence are अहिंसा ब्रैकेट रे लिखिबो नॉन वायलेंस एति की तो कथा देखो फुल स्टॉप दे के truth and non violence are like ओडिया को मानकर एठी अछि मो ग्रुप रे हला सोमवार दिन सबु माने ओडिया रो फोटो उठे की हला तो इंपोर्टेंस क्वेश्चन तुम बको छाडी देबी तमे एकुटिया ग्रुप रे छाडी देबी तमे ने सी को पढी दबो हां लिखो कोन लिखलो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर like two side of the same coin truth and non-violence are like two side of the same coin एक देख लो they together constitute कौन कितने पॉइंट तुम अंडरलाइन करिवो कहलो लिखि दियो रश्मिता रखो बुक लिखो कौन लिखलो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस are like two sides of same coin they together constitute a unity for struggle कौन unity of struggle against all odds struggle against all odds ODDs तापर लिखो in the early part of his life कमा देखि लिखो गांधीजी was
Gandhiji was the conviction spelling CON, huh, CONVICTIONS, conviction of God. Conviction, but that God is truth. God is truth. सेटा को ब्रैकेट लिखो. Full stop. In the later part of his life, Gandhiji reversed his thought and Gandhiji reversed his thought and come on to assert that truth is God. ताको ब्रैकेट apostrophe comma किंबा ब्रैकेट रखो. Truth is God. Gandhiji was successful in this new Gandhiji was successful in this new transformation in his thought and philosophy. As truth appear truth appeared before him as a weapon माने शत्रु, weapon, WEAPON, weapon to fight against all evil and odds. Evil. Long question. Evil and odds. तापले अहिंसा generally means एटा थिला सत्य हला. तापरे अहिंसा generally means हाँ आ गोटे पैराग्राफ करो. अहिंसा पकरो आ गोटे पैराग्राफ करो. अहिंसा generally means non injury or non killing. अहिंसा generally means non injury किए से अहिंसा generally means non injury or non killing or abstention from abstention abstention from the use of force the use of force full stop. But according to Gandhiji non-violence means Gandhiji पाखरे कमा देबो तापर लिखबो non-violence means not offending anybody. Non-violence means not offending anybody. Offending, OFFENDING, offending anybody. कमा देके लिखा but not hurting anybody. Offending anybody लिखिए कमा दबो तापर लिखबो not hurting anybody. Hurting means HURTING हला.
माने कष्ट पहुंचेबानी काहाको एनी कोन लिखिलो नॉट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट एनीबॉडी पाखर एनीबॉडी सेंटिमेंट से गोटे वर्ड है ना एनीबॉडी सेंटिमेंट सॉरी not breeding BREEDING हाँ कौन ग्रीडिंग हुए ब्रीडिंग BREDDI हाँ BREDING breeding any body sorry any uncharacterable thought even with an enemy even with enemy with an enemy लिखिबो with an enemy हाँ कमा देखि लोके and doing something good to other doing something good to others is लगा others and without expecting anything in return full stop हाँ फल करो किंतु फल को सॉरी कर्म करो किंतु फल को आशा करो से बेले से कहबे समथिंग गुड करो किंतु से रिटर्न रे किछि पाइबो हां तापर लिखो द मेन सोर्स ऑफ अहिंसा इज लव इट इज ट्रू एसेंसी ऑफ मोरालिटी अहिंसा इज लव कमा दे के लिखो it is the true essence of morality it express a sense of love it express लिखो सुनी के लिखो it express a sense of love कौन फास्ट रे किमी हाँ it express तापर लिखो ना कुछ बा a sense of love and goodwill good GOOD हाँ good will हाँ तुम कौन सा पूछी full stop the concept of love of Gandhi love तापर कौन लिख लो of Gandhi खाली of Gandhi the concept of love of Gandhi हाँ तो कहीं क्या कथा सुन जा बाड़े भी Gandhi is much wider than the Christian notion सुना था पर लिखिबो is much wider than the Christian notion notion spelling लिखो NOTION notion माने कौन जाति notion जाति सुन जी कहीं भी पार्टी करके लिखनी एना आउ जने लिखि परनी मु डाकुची जदी न सुडिबियो म आउ थरे कहबे हला तो साइलेंट हे कि लिख कोन लिखिलो कहलो
is much wider than the Christian of notion of love or notion of love or love, L-O-V, love, or the Buddhist notion of of camp, Buddhist notion of compassion, COMPASSION. कमा देखिए लिखो, it is the boundless love for all. कमा देखिए लिखो, it is the boundless love for all. It is the boundless love for all. तब फुल स्टॉप. तापर लिखा पुणी, अहिंसा is the freedom. लघु कहले बा लघु से लिखिबा लिख आ अल्प अछि गोटे पारा. अहिंसा is the freedom of अहिंसा is the अहिंसा is the अहिंसा is the freedom of mind from anger. Ahimsa is the freedom of mind from anger. ANGER. कमा देखिल देखिल तमें गोटे वर्ड कौन पे छाड़ुच सुन 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 है तापर एंगर हेट्रेड एंड एंगर कमा देखिए लिखा हेट्रेड स्पेलिंग HATRED हेट्रेड एंड रिवेंज. It is the weapon. It लिखितले शत्रु कोड लिख weapon. It is the weapon weapon of the strong and brave person. Not for brave opposite कौन ब्रेव होची साहसी ता ऑपोजिट कौन कावर्ड्स. हाँ तो कौन लिखिल ब्रेव पर्सन नॉट फॉर कावर्ड्स स्पेलिंग सी हाँ CO सॉरी এটা कौन लिखबो ये चोर CO अरे को चालू नहीं कहूँ COW कौन लिखबो ARDIC cowards W yes cowards C तापर कौन लिखिलो फुल स्टॉप. अहिंसा is a fundamental virtue VIRTUE fundamental virtue for practicing non-violence self-analysis is practicing non-violence self-analysis is important. It is the full stop देख लिखो. It is the artifice by which one can fight against all odds and evils. Full stop.
and evils. Full stop. और गोटे लाइन लिखि लो evils पर्यंत लिख लो डाकिबी फोन डाकिबी तापर लिखो गांधीयन फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह गोटे लाइन कहीं छाड़ी दबो लिख बुझे भी 4:30 टाइम एमती होचो लिखो गांधीयन फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह एट इंपोर्टेंस पॉइंट लिखो न कोन पई गांधीयन फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह सत्याग्रह को रखिबो कोथिरे ब्रैकेट रे गांधीयन फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह एंड सत्याग्रह माने एंड end and means and हाँ होची के जाने तो मैंने लिखिबानी बोली सेतमें चालोनी and means is based on Gandhian philosophy सत्याग्रह हला सत्याग्रह means लिखि परबा सत्याग्रह and means हला is based on the ideal of truth and non-violence full stop देख लिखो the method of non-violence truth and non-violence लिख लो तापर लिखो the method of non-violence is एटा the method of non-violence is sweep SWI लिखि दो SWIEF sorry FT sweep sweeps तापर लिखो and surest path which gives SUREST surest path which gives long lasting results full stop ठीक अछि हम टिके परे एटा बुझेबी तमन को एबे मो टिके ठीक रिजल्ट एटा आगे बुझेबी ना टिके परे बुझेबी तमन को माइंड एके ठीक करी क्वेश्चन पचरेबी किंतु इची क्वेश्चन सबटो ना अलगा थ्रो मु तम कहितली सब बेले किछ टैक्स दिया जीव माने अछि कि नाही तो सेमती को एटा आगे बुझेबी ना क्वेश्चन पचरी के तापरे बुझेबी ठीक अछि बुझे दउ छै ना तले खसे कोन कहले एटा होची सुनो 2 मार्क्स रेले आगे जति कि ट्रुथ लिखिली सेति कि लिख दबो आ नॉन वायलेंस लिखिली तो लिखिबो फर्स्ट जो गोटे पारा लिखिछो सेटा तमे ट्रुथ रे लिखि परिबो सो ए कहले गांधीयन प्रैक्टिकल फिलोसफी हला गांधी जी कर एक्चुअली एटा में कोन थ्योरी पढंती हला से होचंती कोन जने गांधी जी होचंती कोन जने कंटेम्पररी फिलोसफी हला से फिलोसोफर जने गांधी जी तो से कहउचंती तांकर प्रैक्टिकल माने जोटा रियल लाइफ रे जहा घटे से कोन कहउछ गांधीयन प्रैक्टिकल फिलोसफी बेस्ड ऑन टू बेसिक प्रिंसिपल हला गांधी जी कर जो प्रैक्टिकल फिलोसफी देटा प्रिंसिपल ऊपर बेस करिछि गोटे होछि सत्य आ गोटे होछि अहिंसा सत्य रे आ गोटे ना कोन होछि इंग्लिश टर्म ट्रुथ अहिंसा रे कोन नॉन वायलेंस से ए ट्रुथ और नॉन वायलेंस को कहले गोटे कॉइन रो दिटा पार्श्व बोली कहले बुझले तो सही कथा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर लाइक टू साइड ऑफ सेम कॉइन गोटे कॉइन रो दुईटा पार्श्व कोन गोटे होछि ट्रुथ आ गोटे होछि नॉन वायलेंस तो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए यूनिटी फॉर स्ट्रगल अगेंस्ट ऑल ऑड्स से कहछि जते बेले ट्रुथ और नॉन वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट एही कितिबे एकाठी एही कितिबे यूनिटी एही कितिबे से सबोजक ऑड माने कोन सबोजक घटना को बा कोन होछि एविल को शत्रु को कोन करबे हरेई पारिबे बुझला तापरे कहउचन इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ माने कोन अर्ली पार्ट रे पूर्वरु गांधी जी जो लाइफ ता कोन कहला गांधी जी वाज कॉन्सेप्ट दैट गॉड इज ट्रुथ गांधी जी कहउतले भगवान होउचन ट्रुथ द लेटर पार्ट रे कहले ट्रुथ इज गॉड गोटे कांसेप्ट को प्रथमे कहले भगवान गॉड होउचन ट्रुथ तापरे कोन कहले ट्रुथ इज गॉड गांधी पुणी रिवर्ट्स कहले गांधी जी रिवर्ट्स हिज थॉट एंड
come on assert root is God. बुझला Gandhiji was successful in this new transformation in his thought and philosophy. गांधीजी ए जो God is truth थिला से truth is God रे तांकर से लाइफ रे से कोन सक्सेसफुल पाइले हैला ट्रांसफॉर्मेशन से जो ट्रांसफॉर्मेशन ने ट्रूथ ऑफ गॉड जोटा हैला से कोन ले सक्सेसफुल हेले कोन ट्रूथ अपीयर बिफोर हिम वेपन फाइट अगेंस्ट ऑल एविल एंड ऑड्स से कोन कहले ए जो ट्रूथ ऑफ गॉड से कोथि पाई यूज करूतिले ना शत्रु को हरेबा पाई से थिरे कोन पाइले ना सक्सेस पाइले अहिंसा जनरली मीन्स नॉन इंजुरी हेले एटा थिला तांकर ट्रूथ अहिंसा माने कोन अहिंसा माने होची नॉन इंजुरी नॉन किलिंग माने कोन कहूची तमे काहा को इंजुरी दबनी कि काहा को मारिबनी नॉन इंजुरी एब्सटेंशन फॉर द यूज ऑफ फोर्स तमे फोर्स थ्रू मध्य एब्सटेंशन माने दूरे जीवो हला तो बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस मीन्स नॉट ऑफेंडिंग एनीबॉडी गांधी जी को मतरे नॉन वायलेंस माने नुहे कि तमे कोन करिवो काहा को ऑफेंड करिवो काहा को हर्ट करिवो नॉट हर्टिंग एनीबॉडी सेंटिमेंट कार सेंटिमेंट को हर्ट करिवनी गांधी जी कहउछन तमे फिजिकली न हेले भी मेंटली मध्ये तंको हर्ट करि परिबो नाही हला नॉट कोन कुछ एनीबॉडी सेंटिमेंट बट ब्रीथिंग एनी ऑन अनकैरेक्टेबल थॉट इवन द एनिमी से कहउछन कोन तमे कोन करिवो तमर एनिमी रो बा शत्रु रो कैरेक्टर ऊपर कोन करिवो तमे माने कोन करिवो ताको रोकिबा पई जो कहितली सेटा करिवो तापर कुछ अकॉर्डिंग टू सॉरी एंड डूइंग समथिंग गुड तमे कोन करिवो समस्तंग पई बा किछि गुड करिवो टू अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी इन रिटर्न्स हैला तमे जहा पई गुड करिवो तमे एक्सपेक्ट करिवनी तमे जहा पई भलो करिचो एक्सपेक्ट करिवनी से तुमको रिटर्न ने किछि दबो बोली बस से भलोटा पुणी रिटर्न करे दबो माने कोन तमे जणको सहाय्य कलो परे से तुमको सहाय्य करिवो बोली तमे सेटा एक्सपेक्ट करिवनी एडी के कहउछनी ना गांधी जी तांको कांसेप्ट रे अहिंसा कांसेप्ट रे से कहउछंती द मेन सोर्स ऑफ अहिंसा इज लव अहिंसा रे माने होची कोन ना प्रेम तमे काहाकू सहाय्य करिवो इट इज द ट्रू एसेंस ऑफ मोरालिटी हेला एटा होची कोन ट्रू एसेंस ऑफ मोरालिटी बुझला एटा गोटे मानविकता तमे काहा प्रति सेते के माने कोन अछि हां मानविकता देखौ जे मोरालिटी इट एक्सप्रेस सेंस ऑफ लव एंड गुड विल हेला एटा एक्सप्रेस करूची कोन सेंस ऑफ लव एंड गुड विल भलो इच्छा तमे काहा प्रति कोन जो फीलिंग्स टाणुचो गोटे भलो भाव आणुचो गोटे फ्रेंडशिप वे आणुचो गांधी से सेट कथा तांकर अहिंसा रे कहउचंदी It is true essence of morality. It expresses sense, love, and goodwill. The concept of love, Gandhiji, is much wider than Christian notion. Gandhiji को concept टा होची कोन Christian करो Christian करो point तो मध्य उर्ध्वरे wider माने बहुत ऊपर हाँ से तांको belief रो ऊपरे बोली कहउचंती गांधीजी को अहिंसा of love of Buddhist notion of compassion से कहउछ बुद्धिज्म को जो compassion करुणा अछि ताटुरु मध्य अधिका कोटा गांधीजी को अहिंसा it is boundless love for all एटा होछि कोन boundless कहा को गोटे बंधाई न तो boundless bound करि रखु नथबो पूरा फ्री करि के रखुतबो कहा पे ना love for all समस्तन को पाई बुझियला अहिंसा is the freedom of mind from anger अहिंसा माने कोन तमे एंगर को जिति दबा हेट्रेड रिवेंज अहिंसा माने एटा नुआ हैला से कोन कहउछन एटा होछ कोन फ्रीडम फ्रॉम एंगर तमे एंगर रो मुक्ति पाई जीव हेट्रेड रो मुक्ति पाउतबो रिवेंज तमे भाबिबनी कहा प्रति मु कोन करबे रिवेंज नेबी सेगुडा किछि न अहिंसा माने होछ कोन फ्रीडम बा इट इज द वेपन स्ट्रांग ब्रेव पर्सन एटा खाली हमें केवल कोन कोन गांधी जी कहइछन एटा हमें गोटे वीर पाखरे यूज करबे एटा कहा पाखरे यूज करबे ना साहसी व्यक्ति को पाखरे नॉट फॉर कावर्ड्स हला कोनोसी भीरुं का पाखरे यूज करबन कावर्ड को पाखरे न हमको कहा पाखरे गोटे ब्रेव पर्सन का पाखरे यूज करिबार अछि अहिंसा इज फंडामेंटल वर्च्यू अहिंसा होछ कोन गोटे फंडामेंटल वर्च्यू माने भलो गुण वर्च्यू माने भलो गुण हला गुड थिंग फॉर प्रैक्टिसिंग नॉन वायलेंस सेल्फ एनालिसिस इज इंपोर्टेंट एटा कोन ए नॉन वायलेंस ता होछ कोन इंपोर्टेंट समस्तन का लाइफ रे it is active force by which can fight against all odds and evil एटा होची गोटे एक्टिव फोर्स जने कोन करिवो गोटे एविल माने कोन थिला हमरो खराब जिंस हां बुराई जोटा खराब जिंस रो दूर करि नबो कोन अहिंसा हला गांधीयन फिलोसॉफी सत्याग्रह मींस एंड एंड मींस गांधी जी को कांसेप्ट थिला गोटे होची एंड मींस इज बेस्ड ऑन से एंड और मींस माने कोन सत्याग्रह माने होची सत्य प्रति आग्रह हला सत्याग्रह माने कोन तमे जदी सत्य कहबा हां
ହେଲା ତମେ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଗ୍ରହ କରୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଆଉ ମିନ୍ସ କନସେପ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ମିନ୍ସ କାହା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଅଫ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ। ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ। ଦ ମେଥड ଅଫ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଇଜ ଦ ସିଓରେଷ୍ଟ ପାଥ गिविंग लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। तमे जदि नॉन वायलेंस रो पाथ को आपणेइबो ताले तमर कोन पर रिजल्ट निहाती लॉन्ग लास्टिंग हबो बोली गांधीजी कहउछन। एटा तमे जदि आउ लॉन्ग क्वेश्चन लिखिबो तार कैरेक्टरिस्टिक्स इंपोर्टेंस एटा बुक रे देछि मेंशन करि पारि। एतिकी तो लिखिबो ना आउ बुझिला गांधीजी कॉन्सेप्ट क्लियर माने से कोन कहले खाली थ्योरी हला गांधीजी कहइछन ए कॉन्सेप्ट मन रखिबो। शॉर्ट क्वेश्चन जदि आसीबो गांधीजी को कॉन्सेप्ट यूज करथिले तमे लिखिबो एटी ट्रुथ इज गॉड गॉड इज ट्रुथ ए कॉन्सेप्ट मन रखिबो हला। गांधीजी तांको फिलोसफी रे ए कॉन्सेप्ट कहा को यूज करिया दैछन अहिंसा हला। माने जो रिजन का सुन ना ना एते सारा नाही अच्छे बुक रे अछि हाँ हाँ तमे लिखि परिबो किछ ना एठी लिखिछ हॉरिजन कांसेप्ट गांधीयन 5 एक्सियम ला 5 थ्योरी देथिले। हो ठीक अछि एबे मु गांधीजी पढैली मु तुमको से गांधीजी विषय रो किछटा क्वेश्चन पचाउछ हां हां ठीक कहि परछो कि नहीं देखिबो कि नहीं किछ डाउट अछि जे पचारा आसीबो देखो पूरा शॉर्ट क्वेश्चन माने पूरा इजी इजी क्वेश्चन पचाउछ मु जानि छी तमे कहि परिबो एटा तमे माने जानि छ हिस्ट्री पढितबो गोटे जनरल नॉलेज जी के हैना। गांधीजी प्रैक्टिकल फिलोसफी इज बेस्ड ऑन गांधीजी कर प्रैक्टिकल फिलोसफी ता कहा ऊपर बेस करछि मु एबे टिके पूर्वरु कहली को कहा ऊपर ट्रुथ और नॉन वायलेंस प्रैक्टिकल फिलोसफी बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस देटे फर्स्ट पॉइंट रे लिखि ना एटा ट्रुथ माने कोन ट्रुथ इज एबे कहली ट्रुथ इज तमे कहि परिबो सही वाट ट्रुथ इज गॉड कहि परिबो वन कहि परिबो हैला पर गांधी एटा छाड़ो गांधीजी को ट्रुथ होचे प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक माने कोन तमे जा रियलिस्टिक्स माने रियलिस्टिक्स नो रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अलग तमे सेटे यूज करि परिबो हां प्रैग्मेटिक माने तमे रियल रे जा यूज करिवो हां सुना गांधीजी को नॉन वायलेंस मींस नो ऑप्शन रे दोची नॉन वायलेंस माने कोन नॉट हर्टिंग एंड ऑफेंडर एनीबॉडी हैला नॉट ब्रीडिंग एंड अनकैरेक्टेबल थॉट डूइंग समथिंग गुड टू अदर ना ऑल ऑफ दिस गांधीजी ट्रांसलेट नॉन वायलेंस एज गांधीजी ट्रांसलेट करथिले नॉन वायलेंस को आ गोटे को वर्ड रे लव हैला अहिंसा नॉन वायलेंस इज वेपन ऑफ नहिंसा कहूच नॉन वायलेंस एटा कहार शत्रु से कहा को मैं कहूच कोन फिजिकली स्ट्रांग मेंटली स्ट्रांग ना बोथ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग ना नॉन ऑफ दिस माने से कहा को कहितले कहा को स्ट्रांग करि जबो मेंटली हां द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस येल्ड हला ए मेथड ऑफ नॉन वायलेंस ता कोन पई चले टेम्परेरी रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नो रिजल्ट पुअर रिजल्ट कहतला लास्ट पैराटा पढा अंतिनी तो ना पढथंदी हला तापरे नॉन वायलेंस इज a virtue love weapon of brave all of this the method of non violence is swift path a surest path a swift and surest path a slowest path ebe use lekhi chandi how many axiom non violence of gandhi ji chhado कहिछि कोन axiom first हां सेटा एटा कहे बुझिला जहां जहां भी मु जति के पॉइंट देखिछि ता भीतर आंसर अछि अछि कि नहीं सब जका हमें सब क्वेश्चन पाई गले एटा थिला तमर गांधी जी नॉन वायलेंस गोटे क्लास रे गांधी जी नॉन वायलेंस सॉरी गला एबे टिके पूर्वरु से कौन कौन लिखिबा कि से पांचटा जक रिवीजन हां सुनो रिवीजन तमरो थरे थरे हेछि सबो हला स्टार्टिंग रो ए पर्यंत मु थरे थरे रिवीजन सबो करिछि तुम कहबनी जे मु करिनि बोली करिछि कि नहीं कन्वर्सन अवर्तन पांच थर पढैछि हला सिलोजिम को दुई थर पढैछि सुनो सिलोजिम को दुई थर पढैछि फालासी दुई थर पढैछि हला तो जदी आ किछि बुझिबार थिबो देन तमे कहि परिबो इनडायरेक्ट रिडक्शन बुझाई देबी ता पूर्वरु सुनो ता पूर्वरु 10 मिनिट अछि क्वेश्चन पचारछि समस्त हाथ टेकिबो देन मु कहिले कोरस रे कहइबो नाइ कि एकातर सब कहइबो हला कहिबोनी
किए कहूँ कह जड़े जड़े समस्ते कह फास्ट रु लास्ट पर्यंत मु देखी रेडी पचारुची स्टार्टिंग रो फास्ट रो सबुदिन एबे क्वेश्चन पचरा जीव फास्ट क्वेश्चन सुन समस्ते in which proposition both subject and predicate are distributed in which proposition eta hochi immediate inference chapter hala first chapter ru in which proposition both subject and predicate are distributed option debe ki a e i o proposition re subject and predicate distribute हुए हातड़ी को समस्त हातड़ी को कौन जानी ना ए प्रपोजिशन वेरी गुड ए है ना what change सुनो एक what change occurs in the conclusion in the process of aversion है ना what change सुनो what change occurs in the conclusion in the process of aversion aversion रे conclusion माने कौन होता change हुए को aversion है कौन हाँ ऑप्शन है विदाउट ऑप्शन है को कमें कहि परिबनी अवर्सन रे कोन चेंज हुए कोन चेंज हुए नी तुम कह जाएनी हां कोन चेंज हुए अवर्सन रे कोनटा चेंज होता है कंक्लूजन चेंज होता है अवर्सन रे कोन चेंज होता है माने कोन क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सेम थाए कन्वर्सन रे क्वालिटी चेंज थाए अवर्सन रे अवर्सन काहे की देबी कोह तमे माने व्हाट इज कन्वर्सन कन्वर्सन कोन कन्वर्सन प्रथम लाइन कोन कन्वर्सन इज एन part of immediate deductive inference deductive use करबनी immediate deductive inference जोटी immediate नथिबो सेठी deductive मारिबो कि जोटी deductive नथिबो immediate मारिबो हां हला तो legitimate transposition conversion is an immediate inference हां then कहो what is aversion of e proposition को aversion कले कोन हबो को proposition हबो कोन एटा को उठे की बेटे हां कौन बोल ए हैला ये प्रपोजिशन को अवर्सन कले कौन हबो ए व्हाट इज सुना व्हाट इज कन्वर्शन ऑफ आई प्रपोजिशन को कन्वर्सन कले कौन हबो हाय वेरी गुड व्हाट इज अवर्सन ऑफ ई प्रपोजिशन को अवर्सन कले कौन हबो ए को अवर्सन व्हाट इज हां संगे टिके पर को बोली जाओ व्हाट इज कन्वर्शन ऑफ ए प्रपोजिशन को कन्वर्सन कले कौन हबो हाय न हेले वर्ड यूज करनी हैला न हेले वर्ड यूज करनी टोटल नहेले मे बी परहाप्स एगुडा को जम्मा यूज करन जैनिज्म रे पढी देइछ बुझिला तमर नथिले फर्स्ट ईयर तापरे सुना हाउ मेनी इमीडिएट इन्फरेंस आर देयर इन डिडक्टिव लॉजिक रे केते प्रकार इमीडिएट इन्फरेंस अछि सुनंदा कहिए बनी काहेकि चारिटा कन्वर्सन अवर्सन कंट्रीब्यूशन इन्वर्सन हां कहिला मो कहली माने हाँ कहबो को के कोटी के सुब्रत सर माने देखो एटा कहि हबनी नुए सुनो कहबो 4 किबा 3 कहि हबनी कोन पई 4टा आगुरो थिला एबे 3टा हे जाय इन्वर्सन टा कटि जाय छि कोन 3टा अछि हां कन्वर्सन अवर्सन कंट्रीब्यूशन हैला इन्वर्सन टा नाही आइदर 4 किबा 3 बुझिला एबे तमरो सुब्रत सर अछन एबे
ज्योति मैम हाँ ना ना खबर नुहे एबे ओपीएससी जेतु पोस्टिंग हैला ना तो जानि छी सेते पाई गवर्नमेंट पोस्टिंग देला ना तो को मानकर कोठी हैला मोर हैलानी हम कटी हाँ ना तुम मैंने परे जीव मु आगे जीवी माने हमर कॉलेज रो पिकनिक जाउ छन सेउठो जेबी से तमे जो जगह जाउ छन सेई जगह को जेबी एडे डेली देखु जाउनी हां क्वेश्चन पचरंदो आज इमीडिएट इन्फरेंस नेक्स्ट जते बेला आसीबे सिलोजन गोटे गोटे चैप्टर पचरी पचरी के जेबी हैला व्हाट इज वर्जन ऑफ ई प्रपोजिशन का वर्जन कल कोन बा एटे के संगे कहि छि कुआ पुनी सही क्वेश्चन नहीं पचरी के ए हला तापर स्टेट द अवर्सन एटा कोन हबो कहिबो हला लेखु छि स्टेट द अवर्सन ओ अवर्सन नो स्टूडेंट्स आर कावर्ड तो कौन आपको अवर्तन कले हबो कहलो मते all students are non dash coward same non sorry not a dash लिखिबो not a coward same है रो मो एटी शुण मो अवर्सन रे मो कौन कली जदि मो एटी नॉन बदले रे नॉट लिखिली है एटा ठीक हबो ना हबनी काहे कि हबनी जदि नो ई रो मु जानि छि ए रो कोटा आसीबो अवर्सन कर ए जदि मु नॉट लिखु छि को प्रपोजिशन आसी जेबो ओ प्रपोजिशन है ना ऑल सेते बेले ऑल नॉट जेते बेले थिबो हमें फर्स्ट ईयर रे पढितिले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रपोजिशन रे ऑल और नॉट जोटा थिबो सेटा को हमें कोन कहबा सम और नॉट रे इंडिकेट करबा बुझिला तो सेति पई नॉट पाखरे सब बेले डैश दबो नॉट लिखो कि नॉन लिखो गोटे डैश दबो डैश देले सेटा को काको सोचेबो ना कॉन्ट्राडिक्शन को बा कॉन्ट्राडिक्टरी को ला बिना नॉट रे प्रपोजिशन भूल हे जेबो बुझिला आउथरे पचार देबो रुक्मणी मैडम हाँ एटे कावर्ड नॉन कावर्ड जोटे लिखो जो सेटे डैश तब नॉट माने देखो नॉन का देई देबो तो ठीक अछि सुनो हाउ इज इट सिंपल कन्वर्सन हला सिंपल कन्वर्सन केते बेले हबो कहबो हला ऑप्शन क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर सेम क्वालिटी सेम सॉरी क्वालिटी एंड क्वांटिटी सेम क्वांटिटी खाली सेम ना नॉन ऑफ दिस simple conversion hela what is in it simple conversion hela quality same quality and quantity same none of this koda abortion likhu chela but a proposition रे abortion करो some roses are beautiful कौन हबो कहलो एटा कौन करिवो abortion some roses are some roses are not as beautiful ठीक अछि हां हां सेठी भी जोटा कहलो some roses are not ugly हे परिबो direct हाँ सुना in awards on from standpoint both convert and awards different कोटा different है conversion और awards रे कोटा in awards on from what standpoint को standpoint रो both awarded and awards are different कोटा different है awards option होची preposition formation word formation quality and quantity खाली quality quantity in awards on from what standpoint
both overtone and words are different. गोटे क्वेश्चन अच्छी पचार देबी हाँ सुनो the conversion of which proposition different form the converted form standpoint of quantity से कहउचंदी कोन देखो हाँ को proposition बुझियला कोन कहलो a और I हाँ the conversion of which proposition different form converted form standpoint of कोन quantity a ru I जेतबेले transposition of what is the aversion of what is the conversion of o proposition कोन no but none how many premises are there in immediate inference से केतरे premise थाए चारटा केतेडा दुई रु अधिक immediate inference गोटी inference है ना defining inference is a dogmatic process inference is a mental phenomena sorry inference is a mental phenomena but inference is a mental process or judgment inference is logical mode inference is a physical nature कोटा inference is mental process the judgment what is सुनो what are type of deductive inference कोटा कहबो होला dilemma and mixed syllogism like contradiction and implication immediate and mediate formal and informal what are the deductive inference कोगुडा को dilemma and mixed syllogism contradiction and implication immediate and mediate formal and informal immediate and mediate formal और informal कोथि आसीबो fallacy रे what does inference give us inference कोन दिए हला एटा कहली बा कोन inference mental process कला तापर को what are the types of deductive inference केते प्रकार रो deductive केते immediate और mediate हाँ what does inference give us inference कोन दिए direct knowledge ना indirect knowledge inference केते direct knowledge दे हाँ सुना आउ गोटे हेडे इन्फरेन्स हला से तो इनडायरेक्ट नॉलेज दे एटा कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट कहबो हला इम्प्लिकेटिव नॉलेज डायरेक्ट नॉलेज इनडायरेक्ट नॉलेज फेनोमेना नॉलेज इम्प्लिकेटिव नॉलेज हला इम्प्लिकेटिव माने कोन कहलो इन्फरेन्स व्हाट डज इन्फरेन्स गिव अस इन्फरेन्स हमको कोन दे पचारे छला इन्फरेन्स गिव अस डायरेक्ट नॉलेज सॉरी इनडायरेक्ट नॉलेज किंतु इन्फरेन्स कोन कहलो इम्प्लिकेटिव नॉलेज माने एटा होचे जो प्रेमिस और कंक्लूजन रे माने आसीता डिडक्टिव इन्फरेन्स ना ना इम्प्लाइज करे प्रेमिस और कंक्लूजन इम्प्लाइज करबो सेटा होचे इम्प्लिकेटिव नॉलेज in which inference conclusion is less general than the premise देखो implicative knowledge माने कोन होचे conclusion ता conclusively follow करबा कोटे premise को बुझला conclusively माने कोन होचे पूरा निहाती follow करबो जेमे कि कहले all men are mortal हला ram is a man ram is a mortal हला एटा कोन हेछि conclusively follow करछे बा एटा implicative follow बुझला तापरे सुनो कोन कहली एबे भूली गली तमनु हाँ in which inference the conclusion is less general than the premise को inference रे inference टा less general थाए inductive रे less थाए कोन कोतरे deductive रे less general all men are mortal Rama is a man therefore Rama is a mortal premise to conclusion कोन ता less हाँ एबे टाइम हेगलानी कि हेनी तो inference mainly classified how many kinds inference केते भाग रे डिवाइड हेछि कोन the conclusion of immediate inference drawn class अछि सुना सो the conclusion of immediate inference drawn from how many premises ଆଉ ପଚାରିବି ଆଉ ଦିଟା the conclusion of immediate inference is drawn from how many premises କେତେଟା premise ରୁ ଆସେ two or more than two mediate where their legitimate transposition of the premises is known as
कन्वर्सन ना तो कौन तो मैंने कहून कमें दी तीन जन पूछ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस मुझे स्क्रीनशॉट मारी से पठे एटा कहा बुक नियम मुझे बुक आनी प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ए तमन पर क्लास नहीं हो नहीं तो सॉरी कौन छी म्हणजे देखो मत छोटा छोटा